Hi, a very good morning to all of you, and a warm welcome to all our viewers who have joined us on the show. Welcome to our YouTube channel Skepta. I'm your host, Dr. Mani Iyer. Before we start, I request every one of you to please subscribe to this channel, like this video, and also share this video with all your friends and relatives. This will go a long way in supporting us and help us to produce many more such shows and also to bring them to you. So, today, all right, let's begin. Hello, everyone, and welcome to another episode of this show. Today, we are discussing a topic that affects millions of people but is often misunderstood. This is called psychosomatic symptoms. Many people experience headaches, neck pain, stomach problems, chest tightness, or fatigue. They consult multiple doctors, undergo several tests, and yet every report comes back normal. Does that mean that wasn't real? Absolutely not. To help us understand the fascinating connection between our mind and the body, we have with us Miss Nihaarika Dogra, G, counseling psychologist. Niharika Dogra ji, please welcome to the show. Please, and all our viewers, please join me too in welcoming Miss Niharika Dogra ji to the show. Niharika ji, over to you. Before that, Thank you so much. yeah, Thank you bef- so much to you, sir. yeah, thank you very much, Niharika ji. So, I will start with a question. What are psychosomatic issues? Okay. So psychosomatic issues, first of all, it's very important to understand what does the term denotes. Psycho means mind, somatic means body. And psychosomatic is are a mind and body connection. So basically, psychosomatic, they are the physical symptoms जो कि influenced होते हैं by the psychological factors. जो भी unresolved emotions होते हैं, for example, anger, grief, sadness, fear, इन सबको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक इश्यूज विच हैव नो मेडिकल illness, but it is due to our emotions, emotional suppression. That is called psychosomatic. Uh, Thank you, Ji. Now, why are psychosomatic issues often dismissed or misunderstood? Yeah, lot of people gets confused about this, कि whether they are, because they are having all the body pains, they are having muscle tension, neck pain, stomach issues, and but all their reports comes normal, so that is why they are not, nobody is able to diagnose what exactly happening to them. So sometimes they feel that these they dismiss it, saying that it is imaginary, it is all in the head, it is in the mind, it's not real, because all the medical reports, all the tests, they come normal. तो पता ही नहीं चलता है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता है कि whether there is some problem or not. That is why it is highly misunderstood, thing. लोगों को पता ही नहीं चलता है what they are going through. Okay, so you're saying, okay, the mind and the body, how are they connected, man? No, this is a wonderful question. हमारी जो mind and body होती है, that is deeply connected, and I would say that it is deeply interconnected through our brain, our nervous system, hormones and immune system. तो आप देखेंगे जब भी we face a stressful situation या कुछ भी हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, सो हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, राइट। और जितने भी जो भी क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, दे देन कंट्रीब्यूट टू फिजिकल सिम्टम्स लाइक आई हैव मेंशन्ड मसल पेन, नेक पेन, स्टमक इश्यूज.
सो आपकी जो माइंड एंड बॉडी है इट वर्क्स टुगेदर। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, इफ अ पर्सन इज फीलिंग एंग्शियस, उस वक्त क्या होता है? जब भी कोई एंग्शियस फील करता है, आप देखेंगे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हैंड स्वेट करने लग जाएंगे, स्टमक अपसेट होने लग जाएगा। सो दीज आर ऑल द फिजिकल सिम्टम्स। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपके साथ के साथ ही बॉडी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। So Okay, that's how it is, connected. okay. So we experience all the stress and anxiety and all that. So can stress really cause physical pain, ma'am? If yes, how? डेफिनेटली इट कैन कॉज, जो भी प्रोलॉन्ग्ड स्टेट होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है, वो एक कांस्टेंट ना फाइट और फ्लाइट स्टेट में चला जाता है। जैसे कि इफ आई टेल यू इन अ वेरी साइंटिफिक वे, देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस, which has been developed by Dr. Hens Selle in 1936। उन्होंने एक जनरल अडेप्टेशन सिस्टम को डेवलप किया था। नाउ तो उन्होंने बताया था कि देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस विच अ पर्सन गोज थ्रू। वन इज योर अलार्म स्टेज, जहां अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसका एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, या तो आप फाइट करते हैं या आप फ्लाइट करते हैं, और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। राइट, सो दिस इज द अलार्म स्टेज, या योर बॉडी गेट्स एन अलार्म दैट समथिंग इज देयर, सम स्ट्रेस Mhm. इज देयर। देन कम्स द रेजिस्टेंस स्टेज। आप क्या करते हो? उसको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, यू ट्राई टू अडेप्ट एंड कोप अप विद इट। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कोप अप कर सके, हम उसे रिजिस्ट कर सके, या हम उसे मैनेज कर सके। सो दिस इज द Mhm. सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज आती है हमारी एग्जॉशन स्टेज। वेन हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कोप अप करने की, बट हमारा क्या होता है, हमारी जितने भी बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं वो रिप्लीट हो जाते हैं, वो बस हार मान जाते हैं। एंड देन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बर्न आउट and other physical symptoms. So our body goes through these three stages of stress: alarm stage, resistance stage, and the exhaustion stage. तो क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है, जब वो क्रॉनिक स्टेज, जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं स्ट्रेस के, देन ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होने लग जाते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम हमारी बॉडी में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि हम उसको फाइट कर सके। Okay. So what are the common myths, ma'am, about this particular illness, psychosomatic illness? See, the first, the two common myths हैं amongst people is that they think that that is imaginary, that is all in the head, because few people, lot of people think it could be due to overthinking, that could be one of the reason, but हम उसको ignore कर देते हैं just because हमें कोई as I have mentioned, medical reports सारी normal आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है the other person is trying to seek attention, you know ऐसा कुछ भी नहीं है, they are overthinking about this problem. So that is all imaginary, that is all in their head, but ऐसा नहीं होता। Psychosomatic symptoms are real, and it should definitely be evaluated by a medical professional, बहुत ज्यादा जरूरी है। So what are the most common symptoms of this particular illness people would experience? नेक पेन, मसल टेंशन्स, देन स्टमक इश्यूज होना, बहुत ज्यादा आपको बॉडी एक्स होना, फटीग फील करना, these are the common symptoms. Like I get so many clients जो कि हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें यहाँ पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, सारे मेडिकल टेस्ट हम उनके करवा लेते हैं और कुछ नहीं निकलता है। बट यूजुअली दे कम विद दिस कि मुझे थकान हो रही है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर, हमारा न्यूट्रिशन ठीक है, हमारी बैलेंस डाइट है, फिर भी हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें इतना, हमारा स्टमक अपसेट ही रहता है। So all these pains, they have that. So these are the common symptoms. Who is more vulnerable to developing such symptoms? A person who has gone through any chronic stress, the person who has some have anxiety, depression, or any unresolved emotions, they are more prone to
psychosomatic symptoms or any kind of trauma. Hmm. So, what are the causes, ma'am, for the psychosomatic issues? See, there is no single cause for this. There could be multiple factors behind it. Psychosomatic जो भी आपकी इमोशनल suppression होता है वो एक सबसे बड़ा कारण होता है to develop this. Anyone who has gone through grief, they can have those psychosomatic issues. Then poor coping strategies. कई बारी हम कितना stress होता है, we are not able to cope with it. Then unresolved emotional तो हो गया हमारा सेपरेशन. देन आपका कोई अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है या आपका किसी भी तरह का ट्रॉमा है, आपको कोई एक लंबे समय तक यू आर बीइंग मेडिकली अनफिट, दैट कुड बी द रीजन. आपके वर्क लाइफ वर्क वर्क प्लेस अगर कुछ आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, देन इफ देर इज अ बर्न आउट इन योर बॉडी, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है. So all these factors, they are the they cause psychosomatic symptoms. Anything related to your personal life or your professional life, जहां आपको बहुत ज्यादा stress हो जाता है, in which you are not able to manage it and it starts affecting your daily life activities. चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी मैरिज की प्रॉब्लम्स हैं, आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, all these could be a reason for these factors. Okay, Ji. So, but I have still one doubt. Why do the medical reports come normal, even though the person is going through so much? सी साइकोसोमेटिक सर, डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, बट एज सच कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है. आप एक्सरे करवाओगे, आप कोई भी टेस्ट करवाओगे, उसमें फिजिकली एज सच कुछ वो नहीं है, बिकॉज देर इज नो स्ट्रक्चरल डैमेज. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, थॉट्स एंड माइंड बेसिकली. सो वो निकलता ही नहीं है रिपोर्ट्स में कि कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो इतना मिसडायग्नोस्ड रह जाता है, इतना मिसअंडरस्टूड रह जाता है. आप कितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हो जाएं, लोगों को लगता है अरे एवरीथिंग इज कमिंग नॉर्मल, बट फिर भी वो उनकी जो पेन्स है वो जाती नहीं है, जस्ट बिकॉज देर इज नो डैमेज एज सच. ये तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से है, आपके इमोशनल अनरिजॉल्व्ड इमोशंस की वजह से है, आपकी इमोशनल सप्रेशन की वजह से है, जो कि आपको कभी रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देगा. सो दैट Hmm. इज वाई मेडिकल रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती हैं, और इसलिए इसको डायग्नोज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. Hmm. Yeah, understood. So if these people, I mean, in the sense, how, okay, psychologist को थोड़ा पता होता है, but doctors, they may not know. So how do the doctors and the psychologists work together to, address this and to diagnose and manage this psychosomatics issues? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी पेन्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस दैट नेवर इग्नोर योर पेन्स. आपको अगर लगता है कि आपको परसिस्टेंट बॉडी एक्स रह रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि मेडिकल डॉक्टर से आप एक डॉक्टर से इवेल्युएट करवाइए. अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलती हैं, कुछ नहीं निकलता है, देन दे विल रेफर टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड देन द साइकोलॉजिस्ट विल सी वेदर दिस इज बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ द इमोशनल फैक्टर्स. सो उनको अगर कोई भी मेडिकल इलनेस रूल आउट नहीं हो रही है और तब भी वो पेन्स हैं वो नहीं जा रही हैं, वो कंटिन्यूअसली होती जा रही हैं, देन इट मीन्स दैट कुड बी द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स माइट बी देयर. सो दैट Hmm. इज व्हाई दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर. डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे काम करते हैं, और हर का एक रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, ma'am. So, to some extent, I think if we can do some lifestyle changes, is it possible to reduce the psychosomatic symptoms? डेफिनेटली. सी, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू डील विद साइकोसोमेटिक इश्यूज. वन शुड इनकलकेट माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स. आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं थ्रू जनरलिंग, थ्रू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी,
बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड एडुकेट स्लीप। ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, going out, having a good routine, all these will help in reducing your stress. So all these, one should adapt all these lifestyle changes in their life to make their life comfortable and easy. Okay, ma'am. So they could do this, but if they are in the chronic stage, kind of, and how can counseling help them to recover, kind of? The counseling, first of all, it helps in so many ways. First of all, it helps to address the emotional factors. You know, an individual come to know what are their emotional patterns, what are the coping strategies. They will help in their overall improvement of their quality of life. So बहुत ज्यादा psychologists help करते हैं. Therapy really helps in understanding the patterns, in understanding the emotional factors of an individual, and they will help them to cope up with any kind of stress through techniques. There are certain techniques. So वो काफी help करता है counseling, that how to manage your stress in an effective way. Okay. Are these issues completely treatable, ma'am? And what are the factors that would influence the recovery? Definitely, they are treatable. The significant improvement has been seen, but only if the efforts are consistent, if somebody is willing to seek help. That is very important. If a person is adapting a good lifestyle, then definitely we can see a lot of improvement in these symptoms. And it all depends upon early intervention. आप कितनी जल्दी अपने सिम्टम्स को पहचान पाते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं, आप कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इट रियली हेल्प्स. सो इट इज नॉट समथिंग कि बिल्कुल जो है कि ठीक नहीं हो सकता है, वो डेफिनेटली ट्रीटेबल है. Hmm. Okay, but you said that sometimes we need to use, we do lifestyle changes also, and that also would work. But what I would like to ask is, when do you decide कि हमको professional help चाहिए? So when do we people decide that someone should seek professional help? प्रोफेशनल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बहुत एक कॉमन कंफ्यूजन होती है कि हम कब डॉक्टर को दिखाएं, हमें नहीं पता वेदर इट्स अ प्रॉब्लम और नॉट, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एट टाइम्स वी जस्ट इग्नोर आवर पेन्स. तो सबसे फर्स्ट साइन होता है कि अगर आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं एंड दे आर इंटरफेयरिंग इन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज. आपको एक दिन आप टायर्ड फील कर सकते हो, 2 दिन टायर्ड फील कर सकते हो. अगर आप डेली ही टायर्ड फील कर रहे हो, या आपके डेली मसल पेन्स हो रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, सो दीज आर द साइंस that you should seek medical help. You should seek that professional help. चाहे वो कुछ डायग्नोज हो ना हो, बट यू शुड ऑलवेज सीक इट. सो अगर वो परसिस्टेंटली 2 वीक से ज्यादा है, आपको पेन्स रहती हैं, देन डेफिनेटली यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. उसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना. Okay. So I think almost we would come to the end. So I would like to say that, what is this one message you would like to every listener to remember and take home about the connection between mental and physical health? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी वन शुड अंडरस्टैंड कि हमारी जो माइंड और बॉडी है, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे वर्क टुगेदर. तो जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी इमोशनल वेलबींग का भी ख्याल रखें. और जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो देर आर मेंटल एक्सरसाइजेस ऑल्सो जो कि हमें करनी चाहिए थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी. सो योर इमोशनल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट इज. और जनरली अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर बॉडी ऑल्सो. Okay, so thank you very much, ma'am,
for dispelling the thing about this particular issue, the body and the Thank you, mind sir. and the psychosomatic issues, because there is a lot of information is not available, and you have come forward to clarify on this. So thank you so Thank much. you, sir. So Thank you. thank you very much for coming here and talking about this particular issue mainly. And so thanks a lot. And Thank you. viewers, please join me in thanking Ms. Niharika Dogra ji to for having come here and spend time with us, and having taken time off from her busy schedule to spend this morning, Friday morning, with us. And thank you very much, ji. Looking Thank you, forward sir. to another show. Looking forward to seeing you in another show of us very Definitely. soon. Thank you, ji. Good day Thank to you, sir. you. Thank you, Bye sir. bye. Good day, sir. Thank you. Bye-bye.